Hello dear friend, I am Clark. Welcome to Joy Clark YouTube channel. In this video, I will discuss Microsoft introduces Copilot AI Chatbot for finance workers and Excel and Outlook. In this video, I will discuss about the Microsoft basically Copilot AI Chatbot for finance workers in Excel and Outlook. आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के रिलेटेड होने वाली है. Before starting video, I will request you please subscribe my Joy Clark YouTube channel. Do likes and comments on my videos. Let's start the videos. First of all, Microsoft introducing Copilot AI Chatbot for finance वर्कर्स इन एक्सेल एंड आउटलुक. जो फाइनेंस को वर्कर्स हैं जो कि एक्सेल और आउटलुक्स जो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स हैं इनको यूज़ करते हैं, तो उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कमाल की हाईली कैपेबल और मोस्ट एडवांस कोपायलट एआई चैटबॉट जो है रिलीज किया है रिसेंटली. जो इसमें एडवांस एआई टूल्स वगैरह यूज हुए हैं, कोडिंग लैंग्वेजेस, फिर इसमें मुख्तलिफ किस्म के टास्क मैनेजमेंट्स, फिर काफ़ी सारे इसमें फीचर्स हैं जो कि एक्सेल और आउटलुक्स वगैरह में नहीं थे. तो जो फाइनेंस मैनेजर हैं वर्कर्स हैं उनके लिए जो माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट एआई मॉडल है बहुत ही कैपेबल एंड एडवांस टूल है. हमारे वीडियो के की पॉइंट्स क्या हैं? Microsoft is launching a co-pilot to finance which it said will be able to perform a handful of common rule specific actions in Excel and Outlooks. Second हमारे पास की पॉइंट क्या है? After testing the new tool, Microsoft Oman Finance Department has seen time saving the company says. ये थे हमारे की पॉइंट्स. लेट्स स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट एआई. माइक्रोसॉफ्ट on Thursday announcement it will release a Copilot chatbot that can perform key tasks for people working in finance. The software company will first after the tool in the public review pricing details and follow. Many business software providers including HubSpot and Salesforce have been working in supercharge existing products with the generative artificial intelligence in the hope of task clients more efficient. The craze began for startup OpenAI in 2022, launching the GPT chatbot and which can spit out natural sounding text or other content which is few words human inputs. 2022 में ओपन एआई और चैट जीपीटी के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने न्यू कोपायलट एआई चैटबॉट को रिलीज किया है जिसमें फाइनेंस मैनेजमेंट के रिलेटेड काफ़ी सारी टूल्स मौजूद हैं जो कि एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है. The typical company comprising the variety of common employees, performance specialist work. We want everyone of the department to be enabled and enriched with Copilot. Charles Lumana, the founder of the Copilot, Microsoft corporate vice president, said in an interview the CNBC in the San Francisco on Wednesday. Microsoft already has Copilot for general purposes, introducing yours in Office application, and it has released Copilot designed for sales and customer service workers. The Copilot for finance will initially run various analysis, reconcile data in Excel and स्पीड ऑफ द कलेक्शन इन प्रोसेस आउटलुक. जो कोपायलट में जो डाटा है उसको एनालाइज करता है, रिकनसाइल डाटा करता है, एक्सेल स्पीड इसकी स्पीड अप करता है और इसके कलेक्शन का जो प्रोसेसिंग है वो उसको इंक्रीज करता है.
So additional features will come into the finance copilot later this year 2024 में इसके additional जो फीचर्स हैं इंट्रोड्यूस होने वाले हैं. द जापानीज एडवर्टाइजिंग एजेंसी डिस्टॉ विल यूज द कोपायलट फॉर फाइनेंस टास्क एंड लूना. इसकी जो मिसाल है, जापानी एक जो फाइनेंस कंपनी है वो न्यू कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो वेरिएंट को यूज करती है और अपने फाइनेंस को मैनेज करती है. So Microsoft said its finance department providing input onto the development into the new Copilot, and it's seen some early benefits from using it. So comparing data taken from different systems, sometimes every finance team, the planet does a lot of sad, carry, harnicric, modern finance lead to Microsoft Office of the Chief Finance Officer. A couple of the 1,000 people on a finance planning and analyzing team each spend 1 or 2 hours doing reconciliation each week, and with new Copilot it takes more like 10 or 20 minutes per week. He said the idea to develop help these employees spending fewer hours on tedious tasks and provides time for more engaging work that can contributing more to the company. But Microsoft finance employees are not required to use the new Copilot. हरनिक्रिक सैड ने कहा है जी कि जो न्यू कोपायलट है माइक्रोसॉफ्ट का जो वेरिएंट है उसमें जो फाइनेंशियल एम्प्लॉयज हैं उनमें ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, कम वक्त में ये अच्छे रिजल्ट देता है, डाटा को एनालाइज करता है, मैनेज करता है, टास्क को कंप्लीट करता है. और इफ मेनी फाइनेंस प्रोफेशनल इन अ गिवन कंपनी take advantage of these automation thoughts, the company might be able to close its book and more quickly. That is one big patchy for CFOs Lumina said. So ये थी माइक्रोसॉफ्ट ने न्यू कोपायलट को इंट्रोड्यूस किया है. इस न्यू कोपायलट AI बूट को यूज़ करें और फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए ये बेहतरीन चीज़ है. तो ये थी आज की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट न्यू कोपायलट AI चैटबॉट के रिलेटेड. सो जॉय क्लार्क यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.